Hello friends, welcome back to my YouTube channel Target Nursing. So friends, as you all know that in previous lectures we have completed the first unit of OBG, which is of female reproductive systems, and we have studied about the stages of labor in that unit. Okay, so now in this video I thought to bring some important questions, which is the kind of multiple type questions, okay, so which is important for AIIMS nursing exams and other nursing competitive exams. So today we are going to see those multiple choice questions, and I'm gonna give you the descriptions of all the answers. So here let's start today's lecture, but before starting, just do like, subscribe and share the video. So let's start. Okay, so the first question is, ripening of cervix occur during the first stage of labor. Okay, so the first question is about the ripening of cervix occur during the first stage of labor. So here इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि रैपनिंग ऑफ सर्विस जो होती है वो कौन से स्टेज ऑफ लेबर में होती है. तो फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज रैपनिंग ऑफ सर्विस. ठीक है, उसके बाद जो हमें चार ऑप्शंस जो इसमें दिए हुए हैं वो है ए जो है वो फर्स्ट स्टेज है, बी सेकंड है, सी जो है वो थर्ड स्टेज का दिया हुआ है, डी जो है वो फोर्थ स्टेज है. तो जब हमें पता होगा कि रैपनिंग ऑफ सर्विक्स होता क्या है तो उससे हम इजीली गेस कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा. ठीक है, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट the right answer is A. ठीक है, first stage of labor. In first stage of labor, what happens? The ripening of cervix occur. Okay, so in previous lectures we have seen, हमने पढ़ा है already कि first stage of labor कहाँ से start होता है. Starts from the true labor pain till the फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स. तो जब फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स हो जाता है उसे हम रैपनिंग ऑफ सर्विक्स कहते हैं. तो वो हमारा फर्स्ट स्टेज में हो जाता है. तो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होगा. ठीक है, see the wrapping of cervix. The definition of wrapping of cervix: during pregnancy the cervix is closed to keep the baby inside the uterus. ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, सर्विक्स जो होता है वो क्लोज रहता है. ठीक है, ताकि जो बेबी है वो इनसाइड द यूट्रस रहे, वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी ना आ सके. ठीक है, तो जैसे लेबर बिगिन होता है उस टाइम पे क्या होता है, सर्विक्स ओपन होने लगता है. द सर्विक्स विल ओपन और डायलेट वाइड इनफ टू लेट द बेबी कम थ्रू. ठीक है, सो वो वाइड होता है, ओपन होता है, डायलेट होता है ताकि जो बेबी है वो इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे आ सके एट द टाइम ऑफ labor. ठीक है, when the cervix changes from being closed and firm to soft and thin, this is called cervical ripening, and this cervical ripening happens in the first stage of labor because the first stage of labor starts from the true labor pain till the full dilatation of cervix, and this full dilatation is known as the ripening of cervix. ठीक है, so the second question is here, diffuse purulent inflammation of a tissue is called. ठीक है, so first there is a question, this is diffuse purulent inflammation of a tissue is called, and here's the options are A. abscess, B. cellulite, C. boils, D. ulcers. So firstly we have to know that what are these four options. ठीक है, जब हमें इन फोर ऑप्शंस के बारे में पता होगा कि एब्सेस क्या होता है, सेलुलाइट क्या होता है, बॉयल्स क्या होते हैं, अल्सर्स क्या होते हैं, तो उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं. ठीक है, so in questions what ask that diffuse purulent inflammation of tissue is called. ठीक है, so the right answer will be cellulite, and how it will be the right answer I'm going to tell you further. Okay, so B. cellulite is the right answer of second question, and here I'm telling you again, these are the like random questions I have picked, which मतलब ये जो है random questions है और जो मैंने ऐसी बुक से लिए हुए हैं. तो ये जो questions है वो बहुत important भी है, जो काफ़ी बार एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं. ठीक है, तो ये अलग अलग टॉपिक से हैं, एक टॉपिक से नहीं है, तो इनको अच्छे से देख लें. ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर है वो सेल्यूलाइट है. And how it will be the right answer? So first we are going to see that there are the option abscess, cellulite, boils and ulcer. So first I am going to tell you the difference between the abscess and cellulites. ठीक है, and in questions what is given, diffuse purulent inflammation. ठीक है, three symptoms have given the diffuse purulent and inflammation of tissue is known as cellulite. Okay, so what is the difference between the abscess and cellulitis?
ठीक है. Abscess is caused by the Staphylococcus aureus which is a bacteria. ठीक है. And the cellulitis is caused by group A streptococci. ठीक है. The organism secrete coagulase enzyme, and cellulitis the organism secrete fibrinolysin and hyaluronidase enzyme. ठीक है. And the in abscess it is localized inflammation. ठीक है. What happens, this will be a localized inflammation, but in cellulitis it will be diffuse. ठीक है. And here you can see that this is here given the diffuse, that means in questions you have seen the diffuse purulent and inflammation. Diffuse is here also, so the right answer will be cellulite. ठीक है. And the abscess central zone of necrosis. ठीक है. तो abscess में क्या होता है, necrosis जो होता है वो central से start होता है. And the cellulitis extensive necrosis means a wide kind of necrosis. This will be affect all the cell of the body. ठीक है. And abscess pus. ठीक है. रैपिड फॉर्मेशन होता है पस का, इसमें थिक एंड येलो कलर का फॉर्मेशन होता है. सेलुलाइटिस में क्या होता है, जो पस का फॉर्मेशन होता है वो स्लो फॉर्मेशन होता है, थिन होता है और वो आरबीसी कंटेन करता है. ठीक है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एब्सेस एंड सेलुलाइट. एंड by this difference, by seeing these difference, you can tell that what will be the right answer. ठीक है. Because already in questions we have given the properties of that thing, abscess or cellulite. So when we know that what the kind of property cellulitis have, so we can give the answer correctly. Okay. So the second is boil. As you can see here, C options is boils. ठीक है. So what is boils? Boil is a skin infections that start in a hair follicle. ठीक है. The boil is a kind of skin infection that start in a hair follicle or oil gland. At first the skin turn red in the area of the infection and a tender lump develops. ठीक है. After 4 to 7 days, the lump starts turning white as pus collect under the skin. And these boils, ठीक है, as you can see, there are some we can say it boils. ठीक है. बॉयल में क्या होता है, ये एक स्किन इन्फेक्शन होता है. ठीक है. ये जो होता है, जो स्टार्ट होता है हेयर फॉलिकल्स और ऑयल ग्लैंड्स के, लाइक फेस में हो जाता है. ठीक है. जो जहाँ से हमारा ऑयल ज्यादा सिक्रीट होता है. ठीक है. जैसे कि स्काल्प में हो सकता है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि जो स्किन है वो फर्स्टली रेड कलर की टर्न हो जाती है, एंड वो एरिया जो होता है वो इन्फेक्शन हो जाता है. ठीक है. और फिर उसमें लम्स डेवलप होने लग जाते हैं, और 4 to 7 डेज में जो ये लम्स हैं इनमें पस कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है. दिस इज बॉयल. ठीक है. नाउ यू कैन सी द फोर्थ ऑप्शन विच इज अल्सर्स. ठीक है. तो अल्सर्स के बारे में आपने सुना होगा. सो व्हाट इज द अल्सर? Ulcer is a sore of the skin. ठीक है. Or a mucous membrane. So what is the difference between the boil and ulcer? That this is the infection starts in the hair follicle. Remember that the boil will be is a kind of skin infection which will be start from the hair follicle or the oil glands. ठीक है. But the ulcer will happen into the mucous membrane. ठीक है. Like you have seen the ulcers happens mostly at the under the lip. ठीक है. Under the lip and sublingual area of the mouth, and you have heard about the peptic ulcer. ठीक है. So these all are the places where the mucous membranes are present. So these ulcers will be happen there. ठीक है. So the ulcer is a sore on the skin or a mucous membrane accompanied by the disintegration of tissues. ठीक है. टिश्यूज का disintegration हो जाता है. Ulcer can result in complete loss of epidermis and often portion of dermis, even subcutaneous fat. ठीक है. तो जो अल्सर है ये हमारी epidermis, the uppermost part of the skin, epidermis, and below the epidermis, dermis. ठीक है. And below the dermis there is subcutaneous tissue, subcutaneous fat. So it can affect or complete loss of, it can damage the epidermis, even dermis, and even the fat subcutaneous. ठीक है. subcutaneous fat. Ulcer are most common on the skin of the lower extremities. ठीक है. like जो हमारे अल्सर्स होते हैं वो मेनली हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज, स्किन की जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं वहीं होते हैं. ठीक है. और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं, लाइक पेप्टिक अल्सर्स. ठीक है. एन अल्सर दैट अपीयर्स ऑन द स्किन इज ऑफन विजिबल इन इन्फ्लेम्ड टिश्यू विद एन एरिया ऑफ रेडेंड स्किन. वहां पर को रेड हो जाएगा जहां पर को अल्सर होगा. ठीक है. वहां पर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा. अ स्किन अल्सर इज ऑफन विजिबल इन द इवेंट ऑफ एक्सपोजर टू हीट और कोल्ड, इरिटेशन और अ प्रॉब्लम विद द ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है.
जो स्किन अल्सर्स हैं वो कहाँ पर को ज्यादा विजिबल होते हैं, जहाँ पर क्या होगा, हीट से ज्यादा एक्सपोजर होगा या कोल्ड से ज्यादा एक्सपोजर होगा, ठीक है, और जहां पर प्रॉब्लम होगी ब्लड सर्कुलेशन में, वहीं पर क्या होगा, अल्सर्स के फॉर्मेशन होंगे, ठीक है. सो देयर इज अ there are four options given in the questions, which is abscess, cellulite, boils and ulcer, and I have told you about these all four options, that what is abscess, what is cellulite, the difference between the abscess and cellulite, and what is boils and ulcers. Okay, now moving to the next question, which is third question, and here you can see this is boil. Okay, here you can see this is boil, which is start from a place of hair follicle, and this is ulcers. Okay, and now the next question is 1 ml of injection of pitocin contained. Okay, so pitocin is oxytocin, ठीक है, which is given at the second stage of labor. ठीक है, तो ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है. इट इज अ नेचुरल हार्मोन that cause the uterus to contract used to induce labor. ठीक है, जो पिटोसिन या ये ऑक्सीटोसिन जो होता है हमारा, वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है ताकि लेबर इंड्यूस हो सके एंड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सके. ठीक है, कंट्रोल ब्लीडिंग की कंट्रोल करता है ब्लीडिंग को इवन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ. ठीक है, ये पोस्टपार्टम हेमरेज के रिस्क से भी प्रिवेंट करता है. ठीक है, और ये अबॉर्शन भी क्रिएट कर सकता है. ठीक है, तो 1 ml of injection of pitocin contain the first option is 5 mg, the B option is 50 mg, C is 5 international unit, D is 6 ml. So the right answer will be 5 international unit. 1 ml of pitocin consists 5 international units. Okay. Now moving to the fourth question. So the fourth question is, an oxygen delivery system is prescribed for the client with COPD. Okay. An oxygen delivery system is prescribed for a client with COPD to deliver a precise oxygen concentration. Which oxygen delivery system would the nurse prepare for the client? So the first option is phase tent, B is venturi mask, C is aerosol mask, D is tracheostomy collar. So as you can see, these four options all are oxygen delivery system, is a kind of oxygen delivery system. But here what happens in questions, we have given a particular condition which is of COPD, chronic obstructive pulmonary disease. ठीक है, सो यहाँ पे को हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन दी हुई है और उस कंडीशन में हमें कौन सा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम यूज करना है वो बताना है. ठीक है, बट जो हमें चारों के चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं वो चारों के चार के ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स है, बट these all four are used in different conditions. So we have to know what kind of oxygen delivery system we have to put in a patient of COPD. So first option is phase tent, B is venturi mask, C is aerosol mask, and D is tracheostomy collar. So the right answer will be the venturi mask. Now I'm going to tell you that what is venturi mask, what is phase tent, and what is aerosol mask, and what is tracheostomy collar. But the right answer is venturi mask. Okay. Now we're going to see the venturi mask. What is venturi mask? The venturi mask or venti mask deliver a specific FiO2 concentrations. ठीक है? So FiO2 means fractions of inspired oxygen. Okay. FiO2 means inspired oxygen, fraction of inspired oxygen. Okay. So FiO2 इसमें क्या होता है कि वेंचर मार्क्स में एक स्पेसिफिक FiO2 कंसंट्रेशन होता है जिसकी रेंज जो होती है 0.24 एंड 0.50 के बीच में होती है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अडेप्टर. ठीक है, क्योंकि इसके here you can see there are different kind of adapters. You can see red, white, blue, black. ठीक है, so ये जो होते हैं ये
अडेप्टर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप के FiO2 एंड ऑक्सीजन फ्लो को कंसिस्ट करते हैं। तो जो हम जैसे पेशेंट की नीड होगी उसके हिसाब से हम इन अडेप्टर्स को लगाएंगे और पेशेंट को उसकी ऑक्सीजन नीड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो पेशेंट यूजिंग अ रिकमेंडेड फ्लो रेट, ठीक है। वेंचुरी मास्क आर मोस्ट ऑफन यूज फॉर द COPD पेशेंट, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि जो वेंचुरी मास्क जो है हमें COPD पोजिशन में ही लगते हैं, ठीक है। दैट रिक्वायर्ड एन एग्जैक्ट FiO2 विद हायर फ्लो, ठीक है। तो इसमें पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड होगा कि इस पेशेंट को इतना FiO2 लेना है, एग्जैक्ट FiO2 हमें दिया होगा, ठीक है, विद a हायर फ्लो that can be given with a nasal cannula, ठीक है। When using the venturi mask, be sure you do not block the jet port hole with the patient's blanket or gown. This will affect the FiO2 being delivered. तो जो जेट पोर्ट होल होते हैं हमारे ऑक्सीजन मास्क में, ये here jet port hole is here, this one. तो हमें इसे कवर नहीं करना है ब्लैंकेट से या किसी चीज से, उससे क्या होगा, जो FiO2 डिलीवर हो रही है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, ठीक है, और पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल सकती है। तो दिस इज द वेंचुरी मास्क, ठीक है। एंड यू कैन सी दिस इज द काइंड ऑफ वेंचुरी मास्क एंड देयर आर दी different kind of adapters, ठीक है। So this is white adapter, blue adapter, this is a different kind of adapter. You can see here this is a plain blank venturi है, ठीक है। This is blank venturi, there is no hole present here, and here you can see this blue one is having these open spaces, ठीक है। and this blue one adapter, this white, orange, yellow, red and green. This blue consists 24% of what, FiO2 and 2 liters per minute oxygen flow, ठीक है। and this white will consist of 28% of FiO2 and 4 liters per minute oxygen, and this orange one will consist 31% of FiO2 and 6 liter per minutes of oxygen, ठीक है। 35% of FiO2 will consist in the yellow adapter and 8 liters per minute of oxygen, ठीक है। and 40% of FiO2 and 10 liters per minute of oxygen, 60% of FiO2 and 15 liters per minute is oxygen in green adapter. So these are the different kind of adapter which will be given according to the need of the patient, ठीक है। So this is about the venturi mask and this will be used in the COPD patient. And there is aerosol mask. What is aerosol mask? Used for the delivery of aerosol, ठीक है, either by small volume nebulizer or a large nebulizer, ठीक है। So the aerosol mask, as you can see only by the name that what is aerosol mask. Aerosol mask will deliver the aerosol, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एरोजोल जो होता है वो ऑक्सीजन में या फिर मॉइस्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी देता है। तो ये जो एरोजोल मास्क होगा ये थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेबुलाइज्ड सॉल्यूशन एंड इट विल प्रोवाइड ह्यूमिडिटी और हाई एयर फ्लो विद ऑक्सीजन enrichment. It has a large bore inlet and an exhalation port, ठीक है, ठीक है। तो इसमें एक्सलेशन पोर्ट्स भी होते हैं और इनहेलेशन और लार्ज बोर इनलेट भी होते हैं, ठीक है। सो एरोजोल मास्क में एरोजोल प्रेजेंट होता है। स्मॉल वॉल्यूम नेबुलाइजर और लार्ज वॉल्यूम नेबुलाइजर कैन बी अ फेस और अ ट्रैक मास्क. FiO2 depends on the device it is used, ठीक है। Now the tracheostomy collar. What is tracheostomy collar? Which will be given to the patient having tracheostomy, okay, inserted directly into the trachea. This is the kind of tracheostomy mask, ठीक है, and it will be inserted by in the neck of the patient, and this open part will be where the tracheostomy is present, ठीक है। inserted directed into the trachea is indicated for the chronic O2 therapy, ठीक है। O2 therapy जिनको chronic O2 therapy मिलती है, ठीक है। O2 flow rate 8 to 10 liters, provide good humidity, comfortable, more efficient and less expensive. Now this is the face tent mask. The face tent mask provides oxygen to the nose and mouth without the discomfort of a mask, ठीक है। You can see here it has added advantage to be used for the patient with facial trauma or burns. A face tent deliver oxygen concentration of 28% to 100% with flow rates of 8 to 12 liter per minute. So in this question what happens, it will
and this question is asked about the use of oxygen delivery system in the COPD patient. ठीक है, so the right answer will be the venturi mask, and I have told you what is venturi mask, and I have also told you about all other options, which is phase tent. What is phase tent we have studied. Aerosol mask, what is aerosol mask we have studied. Tracheostomy collar we have seen. So now moving to the next question, which will be, the nurse is caring for a client after bronchoscopy and biopsy. Which finding, if noted in the client, should be reported immediately the healthcare provider. ठीक है, so the question is asked कि नर्स जो है वो एक पेशेंट को डील कर रही है या केयर कर रही है जिसकी ब्रोंकोस्कोपी हुई है, ठीक है, और बायोप्सी हुई है, तो हमें क्या उसमें ऐसी फाइंडिंग नोट करनी है जो हमें इमीडिएटली किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या डॉक्टर को इन्फॉर्म करनी है. ठीक है, that can cause a complication. We have to identify that what will be that we have to identify that what will be that condition, that if the patient is having that condition, we have to inform that healthcare provider or the doctor. So there are four options. A is dry cough, B is hematuria, C is bronchospasm, D is blood streaked sputum. So hematuria means blood in urine, okay, and blood streaked sputum means sputum में blood होना, ठीक है, and C is bronchospasm. So the right answer will be bronchospasm. Okay, right answer will be bronchospasm, because what happened, the patient is of having bronchoscopy and biopsy. ठीक है, so if the patient is having bronchospasm, we have to immediately inform healthcare provider. Now moving to the next question, which is a sixth question. The nurse is assessing a client with a multiple trauma who is at risk for developed acute respiratory distress syndrome. The nurse should assess for which earliest sign of ARDS. ठीक है, तो नर्स जो है वो एक क्लाइंट को असेस कर रही है, डील कर रही है, केयर कर रही है, जिसे मल्टीपल ट्रॉमा है, ठीक है, और वो जो है वो रिस्क पे है ARDS होने के, मीन्स एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के. ठीक है, तो नर्स शुड असेस फॉर विच अर्लीस्ट साइन, तो हमें पता करना है कि कौन सा वो अर्लीस्ट साइन है जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को कॉज कर सकता है. तो ए है इसमें बायलैटरल व्हीजिंग, बी इंस्पिरेटरी क्रैकल्स, सी इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, डी इज इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट. सो द राइट आंसर विल बी increased respiration rate. ठीक है, if the patient is having multiple trauma and he is at risk of having ARDS, so we will check the respiration rate of the patient. ठीक है, if the patient is having increased respiration rate, that means the patient is going to happen ARDS. Okay, now moving to the next question, which is seventh question. The nurse is preparing to administer a dose of naloxone intravenous to a client with an opioid overdose. Which supportive medical equipment should be the nurse to have at the client bedside if needed? A is nasogastric tube, B is paracentesis tray, C resuscitation equipment, D central line insertion tray. So the question was asked that एक पेशेंट है, ठीक है, नर्स ने प्रिपेयर करा है, नर्स जो है वो प्रिपेयर कर रही है एक पेशेंट के लिए जिसने नैलेक्सोन, जिसको हमने नैलेक्सोन इंट्रावेनस डोज दी हुई है, जिसने ओपियोइड का ओवरडोज करा है. ठीक है, तो ये नैलेक्सोन इंट्रावेनस क्या होता है, जो ओपियोइड ओवरडोज को रिड्यूस करता है. ठीक है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी. तो हमें इसमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा सपोर्टिव इक्विपमेंट हमें उसके बेड साइड पे रखना है ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो हम उसे ट्रीट कर सके. तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, बी पैरासिंथेसिस ट्रे, सी रेसिस्टेशन ट्रे और सेंट्रल लाइन इंसर्शन. सो द राइट आंसर विल बी द रेसिस्टेशन इक्विपमेंट, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिससिटेट द पेशेंट इफ हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन. ठीक है, तो रेसिस्टेशन ट्रे शुड बी देयर. ठीक है, ओके, व्हाट इज नैलेक्सोन इंट्रावेनस? नैलेक्सोन ब्लॉक्स, जो नैलेक्सोन होती है हमारी, वो क्या करती है, ब्लॉक्स करती है और रिवर्स द इफेक्ट ऑफ ओपियोइड मेडिकेशन. ठीक है, हमने पढ़ा कि जो पेशेंट है उसने ओपियोइड ओवरडोज करा है. ठीक है, तो ओपियोइड ओवरडोज जब हो रहा है तो उस टाइम पे हम नैलेक्सोन को इंट्रावेनसली इंसर्ट करते हैं. ठीक है, इंक्लूड ये क्या करती है, ब्लॉक करती है और रिवर्स करती है इफेक्ट ऑफ ओपियोइड मेडिकेशन, इंक्लूडिंग extreme drowsiness, loud breathing or loss of consciousness. And opioid is something called a narcotic.
ठीक है। Naloxone injection is used to treat a narcotic overdose in an emergency situation. This medicine should not be used in a place of emergency medical care for an overdose. ठीक है, इसे हमें emergency हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम के सिवा कहीं यूज नहीं करना है. ठीक है. Naloxone is also used to help diagnose whether a person has to use an overdose of opioid. ठीक है. So the right answer of the seventh question will be the resuscitation equipment should be near to the bed of the patient having opioid overdose, and we have given the therapy of naloxone intravenous. ठीक है. Now moving to the next question, which is 8th question. When assessing a patient with chronic observed into COPD, the nurse would expect which laboratory finding. जब पेशेंट जो है जिसे COPD है, ठीक है, क्रॉनिक COPD है, तो नर्स को कौन से लेबोरेटरी फाइंडिंग को एक्सपेक्ट करना है. ठीक है. सो ए है डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, बी एलिवेटेड RBC काउंट, सी एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल, डी इंक्रीज PaO2 एंड डिक्रीज PaCO2. ठीक है. So the right answer will be the elevated RBC count, B. Okay. Now moving to the next question, which is of 9th question. Which of the following monoclonal antibody is approved for the treatment of asthma? So what is see here in the question which is what asked that which of the following monoclonal antibody is approved for the treatment of asthma? So A is bevacizumab and omalizumab and cetuximab and trastuzumab. ठीक है. So what is monoclonal antibody? Monoclonal antibodies MAB and MOAB are antibodies that are made by identical immune cells that are all clone of unique parent cell. ठीक है. जो unique parent cell से मिलकर बनती है. Monoclonal antibodies have monovalent affinity in that they bind to same epitope, the part of an antigen that is recognized the antibody. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि ये सेम और ये सेम पेरेंट से नहीं बनती है या फिर डिफ्यूज होती है, ये यूनिक पेरेंट से बनी होती है. ठीक है. इसीलिए इसकी जो एबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है. ठीक है. किसी भी बैक्टीरियल डिजीज या फिर कोई भी डिजीज को ट्रीट करने की. ठीक है. सो दे बाइंड टू द सेम एपिटोप. ठीक है. एपिटोप मतलब कि जो एंटीजन होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ एंटीजन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंटीबॉडी. ठीक है. तो द राइट आंसर विल बी omalizumab. Now move to the next question, which is 10th question. Paradoxical respiration is most commonly seen in. ठीक है. So the what is paradoxical respiration is most commonly seen in A. Congestive heart failure, obstructive airway, cardiac tamponade and failed chest. ठीक है. failed chest फेल है. हाँ ये हाँ दिस इज फेल. सेकंड दिस इज फेल. फेल चेस्ट. ठीक है. सो इन क्वेश्चन व्हाट आस्क्ड दैट Paradoxical respiration is most commonly seen in. Paradoxical respiration means is a term for a sign of respiration distress. ठीक है. Paradoxical respiration में क्या होता है? Respiratory distress होता है. किस वजह से होता है? जब जो स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. स्ट्रक्चर जो रेस्पिरेशन जो लंग्स है, एल्वोलाई जो वर्क करी, जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके कोई स्ट्रक्चर में अगर डैमेज हो जाए, उसके वजह से अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो उसे हम पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? इंस्टेंट ऑफ मूविंग आउट व्हेन टेकिंग अ ब्रेथ. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? जब instead of moving out when taking a breath, the chest wall or the abdominal wall moves in. ठीक है. जब हम ब्रीथ लेते हैं तो हमारे क्या होता है कि जो चेस्ट होती है वो आउट होती है, मूव आउट होती है. लेकिन इसमें क्या होता है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन में? इसमें जो हमारी चेस्ट वॉल जो होती है और जो एब्डोमिनल वॉल होती है, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो वो अंदर की तरफ को चले जाती है. मीन्स अपोजिट होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन की. ठीक है. नॉर्मली हमारा जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो चेस्ट जो है हमारी वो
अप हो जाती है, ठीक है। बट इन पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, क्योंकि वहां पर को क्या है, कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो चुकी है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब हम इंस्पिरेशन करेंगे, जब हम सांस लेंगे, तो जो चेस्ट वॉल और एब्डोमिनल वॉल है हमारी, वो अंदर को जाएंगी, ठीक है। तो चेस्ट वॉल एंड द एब्डोमिनल वॉल जो होगी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है एक दूसरे के, उसे हम पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये हमारा जो होता है, ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, फेल चेस्ट में, ठीक है। राइट आंसर विल बी फेल चेस्ट. Now moving to the next question, which is of 11th question. How do you know that the intercoastal drainage tube is functioning? तो हमें अगर intercoastal drainage tube का देखना है कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है, तो हम उसके लिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यू बबलिंग इन वाटर सील बॉटल, बी इज कंटिन्यू बबलिंग इन सक्शन ट्यूब, सी इज ऑसिलेशन ऑफ वाटर कॉलम इन ड्रेनेज बोतल, डी इज नो बबलिंग इन ड्रेनेज बोतल, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी oscillation of water column in drainage bottle. The C will be the right answer of this question. Oscillation of water column means uh, oscillation of water column is where a large amount of moving water acts as a piston in a cylinder. ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एक पिस्टन की तरह वर्क करेगा सिलेंडर में, ठीक है। द एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द कॉलम एज द वेव रेजेस, न्यू एयर इज सक्ड इन एज द वेव फॉल बैक डाउन अगेन. इन दिस डिवाइस द मूवमेंट ऑफ एयर विल टर्न टर्बिन एट द टॉप ऑफ द कॉलम, ठीक है. ऑसिलेशन ऑफ वाटर कॉलम इन ड्रेनेज बोतल, जो ड्रेनेज बोतल लगी होगी वहां पर क्या होगा, वाटर का ऑसिलेशन होगा, मीन्स वाटर का जो मूवमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से, इससे हम पता कर सकते हैं कि इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब जो है वो फंक्शन कर रही है, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंट सलाइवेशन इज नोन एज, ए इज जीरोप्थेल्मिया, बी इज जीरोस्टोमिया, and C is pituitarism and D is halitosis. The right answer will be gerostomia is the deficient salivation. Gerophthalmia is a eye disease, ठीक है. C is pituitarism. Pituitarism means मतलब एक strange sounding, it is a kind of strange sounding word for excessive saliva. You can say the excessive saliva, ठीक है, pituitarism, and the deficient saliva is gerostomia, and halitosis is smell and breathing, bad smell and breathing. Moving to the next question. 13 pairs patches are present in. So what is pairs patches? The option A is stomach, B is jejunum, C is ileum, and D is duodenum. So the right answer will be ileum. Pairs patch will be present in ileum. So what is pair patch? Pair patches are small masses of lymphatic tissue found throughout the ileum region of the small intestine, also known as aggregated lymphoid nodules. They form an important part of immune system by monitoring intestinal bacteria population and preventing the growth of pathogenic bacteria in the intestine. Now moving to the next question, 14th question. Release of pancreatic juice is stimulated by which of the following? ठीक है, so the right answer A is enterokinase, B is cholecytokinin, C is trypsinogen, D is all of the above. For 14th, the right answer will be cholecystokinin is helps to stimulate the release of pancreatic juice. Okay. Now move to the next question, which is a 15th question. Frequent vomiting put the patient at the risk of metabolic acidosis with hyperkalemia, metabolic acidosis with hypokalemia, metabolic alkalosis with hyperkalemia. D is metabolic alkalosis with hypokalemia. So the right answer will be frequent vomiting. Here's a question. The highlight will be the frequent vomiting. तो फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग से जो पेशेंट है वो हमारा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद हाइपोकैलेमिया के रिस्क पे होता है, ठीक है. तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होता है, ये एक मेटाबॉलिक कंडीशन होती है जिसमें जो पीएच होता है टिश्यू का वो एलिवेटेड हो जाता है बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज, ठीक है. And this result of decreased hydrogen ion concentration and leading increased bicarbonate and
alternatively a direct result of increased bicarbonate concentration in the body, and hypokalemia is deficiency of potassium. ठीक है, the normal glomerular filtration. Next question is 16 question, which is a normal glomerular filtration rate is A 100 ml per minute, B 125 ml per minute, C 125 liter per minute, D 2 liter per minute. So the right answer is 125 milliliter per minute, normal glomerular filtration rate. Now moving to the next question, which is of 17th question. Anabolism means A. Storage of energy, B. Breakdown of energy, C. Changed in energy, D. All of the above. So the anabolism means storage of energy. Anabolism means storage of energy. So A is the right answer. Now moving to the next question, 18th question. Christmas tree appearance of urinary bladder is seen in. ठीक है, A is enuresis, B stress incontinence, C neurological bladder, D polycystic kidney. So the Christmas tree appearance happen in neurological bladder. Okay, so what is Christmas tree appearance? A pine cone bladder or Christmas tree bladder is a cystography appearance in which the bladder is elongated and pointed with a thickened turbiculated wall. Occasionally is also seen in the bladder neck obstruction of non-neurogenic causes. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है कि पाइन कोन ब्लैडर जो है, जिसमें हम क्रिसमस ट्री ब्लैडर भी कहते हैं. एज यू कैन सी हियर, दिस इज द काइंड ऑफ, ये जो दिख रहा है, सो दिस इज द पाइन कोन ब्लैडर. ठीक है, तो इसमें क्या है, cystography में appearance होता है in which the bladder is elongated, pointed with a thickened turbiculated wall. Occasionally it is also seen in the bladder neck obstruction. जहाँ आपको bladder neck obstruction हो जाता है, नॉन न्यूरोजेनिक कॉजेज होते हैं जिसके, ठीक है, कि उसमें भी दिखता है. अब जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर. क्रिसमस ट्री अपीयरेंस जो होता है यूरिनरी ब्लैडर का, वो न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर में देखा जाता है. सो व्हाट इज न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर? इट इज अ name given to a number of urinary condition in which people who lack bladder control due to a brain, spinal cord और a nerve problem. न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर मतलब कि जब जो पेशेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने ब्लैडर कंट्रोल खो दे रहा है. किसकी वजह से? ड्यू टू अ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व प्रॉब्लम की वजह से. ठीक है, कोई भी ब्रेन प्रॉब्लम है, उसको स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम है या फिर नर्व प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो अपना ब्लैडर कंट्रोल जो है वो खो दे रहा है, उसे हम न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर कहते हैं. और उसी में ये पाइन कोन शेप्ड अपीयरेंस जो होता है ब्लैडर का, वो सिस्टोग्राफी में दिखता है. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज ऑफ 19 क्वेश्चन. व्हिच वन इज द फॉलोइंग Which one is the following teeth used for crushing and grinding the food? A is canine, B is incisor, C is molar, and D is premolar. So the right answer is molar. Now you're gonna see the question is asked कि चबाने में और फूड को ग्राइंड करने में कौन से दांत जो है वो काम आते हैं. तो वो जो मोलर टीथ होते हैं हमारे, वो काम आते हैं. ठीक है, सो हियर यू कैन सी द अपर जो एंड लोअर जो, यू कैन सी 2, 1, 2, 3 is the dental formula. So these two teeth are incision, and this is canine, is premolar, and these teeth, these 3 upper jaws and these 3 of lower jaws are helping the grinding in the food. So the molar will be the right answer. Now move to the next question, which is 20 question, and the last question. Pleural effusion is also known as. So the option is pneumothorax, hemithorax, hydrothorax, spontaneous pneumothorax. ठीक है, सो प्लूरल फ्यूजन क्या होता है, जिसमें हमारा फ्लूइड जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है लंग्स में. ठीक है, ड्यू टू पुअर पंपिंग बाय द हार्ट और बाय द इन्फ्लेमेशन. ठीक है, इसमें मतलब क्या होता है कि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है लंग्स में. तो इसका अदर नाम क्या है, इसको हम किस नाम से जाते हैं? न्यूमोथोरेक्स. ठीक है, हेमिथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स. इसे हम कहते हैं हाइड्रोथोरेक्स. हाइड्रो मीन्स वाटर, थोरेक्स मीन्स चेस्ट में. तो जब वाटर जो होता है हमारे
लंग्स में कलेक्ट हो जाता है उसे हम हाइड्रोथोरिक्स कहते हैं और प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं. दिस विल बी द राइट आंसर फॉर द 20th क्वेश्चन. Okay. So with this we have completed 20 questions of multiple choice 20 sets of multiple choice question for the important question for the AIIMS nursing exams or other competitive nursing exams. So these are the random questions from any topic in the books. Okay, this is not from a specific topic. So you just see these questions and try to give your answer by before given by me, so that you can know that whether you know the answer or not. So this is all for today. Okay. सो एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, कोई भी सब्जेक्ट से हो रिलेटेड टू नर्सिंग, तो मैं उससे उस टॉपिक को पढ़ाऊंगी. ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो विल बी also in the important question for the AIIMS nursing officer exam or other competitive nursing exam. But अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक पढ़ाऊँ कि तो मुझे सजेस्ट करो कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको टॉपिक जो है वो क्लियर करूँगी. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड please do like, subscribe and share the video as much as you can. Thank you.